Okay. So let's start with SN2 substitution. Sorry, nucleophilic. I'm writing in short. Substitution reactions. Let's just take that simple example with then alkyl halide, for example. This is alkyl halide. The X can be chlorine, bromine, iodine, anyone. Okay. When react with KOH in presence of acetone. And the formula of acetone is, you must know this thing, because sometimes above means in the reaction they used to just mention the formula instead of writing the name. Okay, so that is why I'm writing both the things, both formula and as well as name. So this is the formula of acetone, CH3, C double bond O, CH3 and acetone. If they write acetone, so you will clearly understand that which type of reaction will be this. CH3, OH plus your nucleophile. Or sometimes KX. Clear? Either your simple nucleophile will come out or it will combine with K. So listen, beta, what is this reaction? So what happened when the substitution reaction takes place? Means the bond between this breaks. Positive charge will come over this, negative charge, this will become nucleophile. And when this come out of this will become nucleophile and they just change their positions. Generally we know this. ऐसा ही होता है कि एक न्यूक्लियोफाइल गया, उसकी जगह पे दूसरे न्यूक्लियोफाइल आके सब्स्टिट्यूट हो गया. That is why we used to call it as nucleophilic substitution reaction. Clear? Okay. Now, I just want to recall about SN1 type of reaction. In SN1, we have studied that first step, I'm just specifically mentioning here. In SN1, we have studied that in first step, what was the first step? Formation of carbocation takes place. Formation of carbocation takes place. But in SN2, this steps actually not happen. In SN2, this reaction, this thing will not happen. No formation of carbon cation. Why? Why, beta? Because when we talk about the stability, तो SN1 में हम क्या ले रहे थे बेटा? हम वहाँ कायरल कार्बन एटम ले रहे थे. कायरल कार्बन एटम मतलब कि भाई वहाँ स्टेबिलिटी पैटर्न था 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल. यही तो था हमारा नॉर्मल स्टेबिलिटी पैटर्न. ठीक है. But what happened? See the here. Now in SN2 we are taking methyl group along with a halogen. Alkyl halide is just the simplest one, methyl, which is considered to be as least reactive or least stable in case of SN1 reaction. Okay. So what happened? If we talk about this methyl group, so this methyl is considered to be as least stable. This methyl is least stable. Clear? और जब ये least stable है तो no carbocation, no carbon cation will form here. Clear? दोनों में difference है, याद रखना. When we were performing experiment with this SN means SN1, जब हम SN1 reaction के साथ experiment करते हैं तो हम वहां पर stable compounds लेते हैं. मतलब हमारे पास जो stability देखते हैं कि हमारे पास stable carbocation होना चाहिए. ठीक है. अब क्या हुआ, यहाँ अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो 3rd डिग्री ज्यादा स्टेबल थी, 2nd डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल. बट यहाँ पे वी आर टेकिंग मिथाइल ग्रुप अलोंग विद एन हेलोजन.
So this is alkyl halide, means least stable alkyl halide, and with least stable alkyl halide, carbocation formation is not possible. Clear? Now let me just tell you mechanism of this, which is actually very important, because of after this mechanism we'll be able to identify that what is the difference between this SN1 and SN2. What is happening here? Why we are taking this methyl group? After taking this methyl group, what is going to be happen in this reaction? Okay. So for example, let me just draw the methyl structure. So in methyl we have 3 hydrogens. So let me just draw one hydrogen with these dashes and one with bold line. And this is the front hydrogen, this is the back hydrogen. Along with this, we have attached halogen here. This is the open chain type of structure now. Okay. So what happens when you react this methyl with KOH? One most important point to be noted here, this KOH. In SN1, I'm just writing here. In SN1, we were taking H2O, which was polar protic solvent. But in SN2, we are taking KOH. SN2, we are taking KOH. And this KOH is known as polar aprotic solvent. Note it down. This is the major difference. Because of this solvent, we'll be able to perform our experiment with SN2. ये KOH ही responsible है यहाँ पर इस reaction को carry करने के लिए, है ना? Because we have compound alkyl halide. जब हमारे पास solvent ही अच्छा नहीं होगा तो हम कैसे reaction को perform करेंगे? So KOH is polar aprotic solvent. I will tell you the difference between polar protic and polar aprotic later on. Don't worry. When I will explain you ना the factors affecting SN2, तो तब वहाँ सॉल्वेंट को लेंगे, मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगी कि दोनों का डिफरेंस क्या होता है, क्यों यहाँ KOH लिया जा रहा है, वाटर नहीं लिया जा रहा. क्लियर? One next important point, what happened when this react with KOH? So carbon is dash 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 hydrogen and this old hydrogen along with one more hydrogen. What happened? This X group, this can be chlorine, bromine, iodine, anyone, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे X group. तो क्या होता है बेटा? These X groups are electronegative. We know this thing. हमारे halogens क्या होते हैं? Electronegative होते हैं. So because of its electronegativity, जो bone dipole movement है वो किसकी तरफ रहेगा? X की तरफ को रहेगा. तो क्या होगा? We will get partial negative charge over here. अगर यहाँ partial negative charge है तो because of influence of this we will get partial positive charge on this carbon. I'm just draw this diagram here. I'll draw this thing here so that you'll be able to understand this clearly. I'm drawing the same diagram. This halogen is here. So what happened? Due to its electronegativity, what happened? The means the electron means you can say influence of electron will move towards the halogen. Because of that, it will occupy the mass delta negative. Delta negative means slightly negative charge, and it will acquire slightly positive charge. So what happened? This is known as the transition state. ये हमारी क्या बनती है? ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हम इंटरमीडिएट स्टेट भी बोलते हैं. क्या हुआ यहाँ पर कि भाई सबसे पहले यहाँ पे इन चार्जेस की वजह से, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, द चार्ज विल शिफ्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया, पार्शियल पॉजिटिव. सिंस वी नो दैट अगर KOH यहाँ से डिस्प्लेस होता है, if your KOH will split out, so OH negative electrophile nucleophile, where it get attached? It will attach from the back side. It will attach from the back side. Sometimes students used to ask कि भाई मैम एक चीज बताइए, हमने यहाँ इसको निकाल रहे हैं, अभी हमारा ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से निकला नहीं है, तो ये OH पीछे से अटैक क्यों कर रहा है? लिसन बेटा, ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है SN2 रिएक्शन में, KO देखो वाटर मॉलिक्यूल पोलर प्रोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो पोल्स क्रिएट कर देता है, वो हेलोजन को वहां से हटा देगा, क्लियरली हटा देगा.
लेकिन KOH क्या है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट। यहाँ पे ये हम सिर्फ न्यूक्लियोफाइल ऐड करने के लिए इसको यहाँ डाल रहे हैं। KOH will give nucleophile to the reaction so that it can combine with this compound, your alkyl halide के साथ जुड़ सके, है ना। तो क्या होता है, it will not create poles, but what happened when when OH is available there in the solution, हमारे solution के पास OH होगा, तो क्या होगा, because of this movement electronegativity की वजह से क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कुछ भी हो, all are electronegative, जनरली क्लोरीन और ब्रोमीन ही लिए जाते हैं। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस मींस इन्फ्लुएंस, क्या होगा, कार्बन एक टाइम के बाद इसको छोड़ देगा, क्योंकि इसको यहाँ पे OH ज्यादा स्टेबल मिल रहा है और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो स्टेबल किसके साथ बनेगा, इसके साथ कि इसके साथ, OH के साथ ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बना पाएगा। तो जब आपसे दिख रहा है कि भाई फ्लोरीन या क्लोरीन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या होगा, OH के आते ही इसको यहाँ से छोड़ देगा टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। क्या होगा, after that we'll get our final product, which is CHHOH plus X negative. This nucleophile will get out of the reaction. It is not actually like fixed that it will combine with K. K के साथ combine होके निकले, ये अकेला भी जाएगा, एक ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकले हुए इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल को बांध लेता है अपने साथ, तो वो कंबाइंड स्टेट में निकलेगा। लेकिन SN2 में क्या होता है, इट इज नॉट नेसेसरी कि दैट दिस न्यूक्लियोफाइल विल गेट आउट ऑफ द रिएक्शन आफ्टर कंबाइनिंग with K. It can just remain in the solution in this state also. Okay, so क्या होता है बेटा, अब आपने देखा कि भाई यहाँ पे OH के पास अटैक करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, क्योंकि यहाँ से जब न्यूक्लियोफाइल निकला नहीं है तो यहाँ से तो वो अटैक नहीं कर सकता, तो वो कहाँ से जाएगा, पीछे से घूम के जाएगा कार्बन के पास, और ये यहाँ पर बना ले। और ये चीज हमें पता है, व्हेन द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द बैक साइड, तो हमारे पास क्या बनता है, और यू कैन से रेयर साइड। न्यूक्लियोफाइल, हम जस्ट राइटिंग हियर, अटैक फ्रॉम रेयर साइड, एंड फॉर योर कन्विंस आई एम जस्ट गोइंग टू द बैक साइड। तो क्या होगा, which type of reaction compound will form, inversion. Clear? Every time whenever you perform the SN2 reaction, your product will be inversion type. अगर हम उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो that will be inversion, not retention, not racemic. SN1 में क्या हो रहा है, we'll get compound racemic type. Racemic means both retention and inversion, but in SN2 we always get inversion only. Note this thing clearly, because every time when you perform the reaction, your nucleophile will attack from the back side of the compound. Clear? Note this thing. अब बच्चों ने ये अब एक क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि भाई ये बताइए कि मैम ये रिएक्शन जो है हमारी सिंस एक ही स्टेप में खत्म हो रही है, दिस इज ओनली अ वन सिंगल स्टेप। SN1 में we were having two steps. First, this nucleophile detached, we'll had stable carbocation and one nucleophile. After that, water molecule break and attack on that. दो स्टेप में हो रही थी, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्टेप में हो रहा है, ये गया इसके साथ जुड़ा और बाहर। तो क्या होता है बेटा, दिस इज एक्चुअली अ वेरी फास्ट रिएक्शन। मीन्स आप कह सकते हो इतना भी वो मतलब ना तो इतनी फास्ट होती है ना स्लो होती है, बट इसकी सॉल्वेंट की वजह से, दिस सॉल्वेंट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ टाइम ही नहीं मिल पाता कि कार्बोकेटायन बन सके। ठीक है, और अगर आपसे पूछते हैं कि भाई कितने टाइम में ये पूरी रिएक्शन आपकी यहाँ से यहाँ तक खत्म होती है, तो 10⁻⁻6 सेकेंड्स। इट टेक्स 10⁻⁻6 सेकेंड, इतनी भी कोई स्लो या फास्ट नहीं होती, 10⁻⁻6 सेकेंड। क्लियर? ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमने ये बोला कि भाई मैम SN1 में हमने पढ़ा था कि इन SN1, मैं दोनों का बताती चलूंगी साथ साथ। इन SN1 हमने ये पढ़ा कि RDS जो होती है, RDS मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, दिस विल डिसाइड कि भाई आपकी रिएक्शन जो होगी स्लो है कि फास्ट। मतलब जो सबसे स्लोएस्ट रिएक्शन है
वो रेट डिटरमाइन करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही स्टेप में हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, सिंपल, आपकी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो यही रहेगी, RDS। इकलौती एक ही स्टेप है, वो पूरी वो ही डिटरमाइन करेगी आपका कि भाई क्या है, स्लो है, फास्ट है, किस तरीके की है रिएक्शन, ठीक है। अब एक चीज और बताते हैं, हम SN1 को बोलते थे, SN इज अ वन मॉलिक्यूलर, है ना, हम उसको या फिर बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, बट SN2 आर means in SN2 two molecule involves or di-molecular. Di means, sorry, bi-molecular. It can be di or bi. The same thing is there. Bi-molecular. Why this is bi-molecular? Why two molecules are involved? Since we have a single reaction. तो क्या होता है बेटा, बताती हूँ आपको, दोनों में डिफरेंस पूछ लेते हैं कि भाई बताइए इसको वन मॉलिक्यूलर और इसको टू मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं। पहले हम बात करते हैं SN1 की, मैं यही लिखती हूँ, जस्ट राइटिंग इट हियर। SN1 में क्या होता है, वी हैव टू स्टेप्स एंड वन कार्बोकेटाइन, वन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। हम अलग से वहां कोई न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं करते, वी हैव ओनली सॉल्वेंट H2O, जहां से न्यूक्लियोफाइल उसको मिलता है, ठीक है। बट in SN2 we have one nucleophile attached with our alkyl group, this one. Second one is the extra nucleophile which we are taking to attach with this. क्लियर। अब केमिकल काइनेटिक्स वाला कंसेप्ट आ जाएगा, K is equal to NU, न्यूक्लियोफाइल to the power 1 in bracket RX to the power 1, हो गया डबल, ठीक है, नोट इट डाउन, nucleophile to the power 1 Rx to the power 1, since we are taking 1 1. But if you increase the number of nucleophile, ठीक है, अभी बताते हैं, एक मिनट। तो क्या हुआ, यहाँ न्यूक्लियोफाइल 1 1 और यहाँ 1 सेकेंड 1। अब बच्चे कहते हैं मैम न्यूक्लियोफाइल तो वहां भी है, यहाँ का क्यों हम मान रहे हैं। SN1 में हमने पढ़ा था कि इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, तो उससे रिएक्शन पे अफेक्ट हो रहा था। इफ यू इंक्रीज द एल्काइल ग्रुप द रिएक्शन विल इंक्रीज, बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोफाइल वाज नॉट मेकिंग एनी डिफरेंस ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आप न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज भी करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही रहेगा जितना था, same, it will be same. So it means SN1 reaction were not affected by the nucleophile, but in this these reaction are affected by the nucleophile. For example, if I ask you to double the nucleophile, so it directly doubles the rate of reaction. Note it down. Now 3 plus 1 molecule are involving, sorry, 2 plus 1 molecule are involving here. So if you increase the concentration of nucleophile, it will directly influence the rate. If you increase the concentration of your alkyl group, means it directly increase the rate of reaction. Means both the concentrations affect the rate of reaction. Clear? दोनों में difference बेटा ये बहुत जरूरी है, because you will get number of questions on SN1 and SN2. आ रहे समझ में? There we were considering only alkyl group and carbocation formation, but in this we consider both nucleophile as well as alkyl group, and both the means if change in concentration of both the things will change the rate of reaction. Clear? So sometimes you will get the question, ये तो एक एक का हो गया कि भाई एक एक को हमने बढ़ा दिया, हमने एक बढ़ाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली बन गया, but sometimes you get question if we increase both, means if you double the concentration of both alkyl group and nucleophile, then what will happen with the rate of reaction? Happen to rate of reaction. क्या होगा? What happen to rate? जब हमें पता है दोनों का ही डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है तो it will become 4 times. Clear? Okay?
ठीक है. So to perform this reaction we require strong nucleophile. To perform SN2 reaction, we require strong nucleophile. Then only you will be able to perform your reaction. Otherwise नहीं होगा. ठीक है. दूसरा हमारा सिंपल होता है. So no carbocation formation will take place. एक ही स्टेप में ये रिएक्शन पूरी खत्म हो रही है, तो no formation of carbocation. Simple. No formation of carbocation. Note it down. In SN1, carbocation formation takes place, but in SN2, no formation takes place. In SN1, we require only solvent, polar protic solvent, not a strong nucleophile. But in case of SN2, we require strong nucleophile to perform the reaction. Clear? Okay. Now, let me just tell you about the transition state. Instead of carbon cation formation, we will obtain क्या? We will get a transition state. तो intermediate state क्या होती है हमारी? Transition state होती है. This one. पूछ लेते हैं which one is the intermediate state. तो वहां पे transition state जो होगी, that will be the intermediate state. ठीक है? Okay? चलिए. Let's just move to the next thing that which I want to tell you about SN2 reactions. Okay. क्या हो रहा था SN1 में? कार्बोकेटायन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मिल रहे थे? इससे मिल रहे थे आपके. भाई हम जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो वहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर शिफ्ट हो गए. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है? इन SN2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड बाय दी कार्बन. मैं ट्रांजिशन स्टेट का बता रहा हूँ कि भाई ये ट्रांजिशन स्टेट में क्या होता है. आई एम जस्ट राइटिंग इट इन शॉर्ट फॉर्म. In transition state, what actually happened? The nucleophile donates its lone pair in anti-bonding orbitals of carbon atom. Note it down. What happened in transition state? This hydrogen X, and when this OH combine with this carbon atom, so it's donate its electron, lone pair of electron in the anti-bonding orbitals. Clear? Then this will be able to combine with this carbon. इसके anti-bonding में जाते हैं. तो पूछ लेते हैं कि भाई electrons कहाँ जाएंगे? जो nucleophile attached होता है, that how nucleophile attached with this carbon atom in transition state, even though it's not remove its previous nucleophile, कि वो अपने previous nucleophile को भी नहीं हटा रहा है, तब भी जाके OH कैसे जुड़ जाता है? तो क्या होगा? It donates its lone pair of electron, और आपको पता है कि when lone pair of electrons कहीं से मिलेंगे तो और influence electronegativity influence की वजह से ये इसको छोड़ देगा. It will accept its electron and combine with OH. तो electrons जाते कहाँ हैं? In the anti-bonding orbitals. ठीक है. अब we'll talk about important thing about solvents. मैं अब एक एक चीज आपको बता रही हूँ क्लियरली कि भाई कहाँ क्या न्यूक्लियोफाइल होता है. रिएक्शन तो यही थी बस. दैट वाज द SN2 रिएक्शन. और सिर्फ रिएक्शन लर्न करने से होगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं पूछेंगे आपसे, वो पूछेंगे इन रिएक्शंस के अंदर क्या है. ठीक है. सो लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट थिंग, दैट इज सॉल्वेंट. That what is the role of solvent, which type of solvent we are taking. So I am just distributing this page into two halves so that I can just tell you the difference in SN1 and SN2. Okay. So let us write SN1 here and SN2 here. Let me just short it down. Within 5 I'll finish it. Okay. This is SN1 and this is SN2. Okay. In SN1 we were having polar protic solvent. Beta note it down. साथ के साथ करते चलो. This is polar aprotic solvent. Clear? Examples: H2O. It can be ethanol. It can be methanol and water. Clear? In SN2,
Polar aprotic are acetone. Maybe better write down the formula also. That's why I'm writing, because instead of name, they sometimes used to give the judges used to write the formula only. SOOCH3. This is dimethyl sulfooxide. Note it down. Dimethyl sulfooxide, because this page is actually short. So that is why I'm writing the short form. Dimethyl sulfooxide. And third one can be DMF. DMF. This is dimethyl formyl. तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे. This is dimethyl formyl, and that was dimethyl sulfooxide. And the formula of this is CH3N C dash H dash O CH3. Note them down, beta, fast. First one is acetone, then DMSO, then DMF. DMF is dimethyl formyl, and this is dimethyl sulfooxide. Fast. Okay, listen. Polar pellotic solvent means they contains hydrogen, or you can say proton. They have proton. Simple, just write it proton. The basic thing is they contain protons, these solvents, polar pellotic solvent. But as you can see, no proton is there. So whenever you perform the reaction, just keep an eye कि भाई कहाँ proton है और कहाँ पर नहीं है. See, both methyl, ethyl and H2O have proton, but in all these compounds we don't have any proton. Clear? So this is the difference between polar pellotic and polar aprotic. They create poles, but they do not. यहाँ पे poles create नहीं होते, but they create actually poles. So note it down. You will get the difference on the basis of the means solvent. You will be able to identify that this reaction is the SN1 or SN2. Okay, we'll continue with the next topic tomorrow. Okay, take a screenshot or note it down.